Hello students, today this clock and me both will teach you together, and today I'll be telling you how to say the time, because time is very important. And if someone is asking you what's the time, then you are confused and you will be saying it's 6:15, it's 6:20, it's 6:45, it's 7:45, it's 7:55. So I'm not saying that these all are incorrect in India, but if I'll be going in foreign countries, or if we're asking you appropriate English, so you should not speak like this. Otherwise the foreign people will be thinking that what the heck are you talking about, and maybe they will be thinking that maybe your English is not very good. So for that you should learn how to tell the time in the perfect way. So let's begin. So before starting the time, you should know how to ask the time, because asking is also very important. So the listeners will understand what I mean to say. So these are the points which is already written over here. You should go through it so that you're not having any problem to ask the time in the future from anyone. So number one is, what time is it? What time is it? अभी क्या time हुआ है? So actually all are having the same meaning, but the way of asking is different. Number 2 is, what's the time please? Number 3, do you know the time? Number 4, could you tell me what time is it? Number 5, what's the time by the watch? So if you'll be saying all these things, it will be more impressive, and other person will be also replying you in very polite manner. So these are the polite manners how to ask the time. Now as you can see over here, it's a very big clock shown over here. So it means it's showing the perfect time, and if perfect time is showing over there, it means you can say it as 1 or 2 or 3 o'clock. Okay, o'clock means perfect time. So as you can see over here, it's 12. So for example, if any perfect time will be 2 or 1 or 3 or 4, you will be adding it as o'clock. So saying o'clock is very important. So as you can say over here, 12 o'clock. So by this way you can also say it's 12 o'clock, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's not 3 o'clock. मतलब अभी 3 नहीं बजे हैं. It's not 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock. By this way you can deal with the time. So remember, this is only for the perfect time, and in perfect time only we'll be using these all types of sentences. So before we continue about the time in detail, you should remember these two formulas, and two formulas are dash pass to dash, dash left in dash. Okay, two formula. Dash pass to dash, dash left in dash, dash pass to dash, dash left in dash, dash pass to dash, dash left in dash. So if you'll be remembering these two formula, they will be knowing problem for you to understand. So dash pass to dash, इसका मतलब क्या होता है? बजकर, मतलब वो टाइम पहले ही हो चुका है. And dash left in dash, इसका मतलब क्या होता है? बजने में, मतलब अभी बाकी है. तो dash pass to dash, इतना बजकर इतना मिनट, and dash left in dash means इतना बजने में इतना मिनट बाकी है. So in first you can write minute, and in second you can write hour. So remember this. Now let's see this clock. एंड इसमें कितने बजे हैं? हम लोग अपने देसी स्टाइल में यही बोलेंगे कि ये तो 12:15 हुए. तो 12:15 हुए मतलब क्या हुआ? 12:15. सो यू शुड नॉट से इट्स 12:15. तो 12:15 बोलना गलत होगा. सो यू शुड लर्न अ वेरी परफेक्ट वे, वेरी एक्सीलेंट वे टू स्पीक इन इंग्लिश. तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला को देखें. फॉर्मूला में क्या बताया था? डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश. सो डैश पास टू डैश मींस 15 पास टू 12, मतलब कि 15 मिनट. तो 12:15. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? मिनट, और सेकंड वाले में आवर. सो 15 पास टू 12. तो पास्ट को हम लोग क्वार्टर भी बोल सकते हैं. सो इफ यू विल बी सेइंग क्वार्टर पास टू 12, आल्सो इट विल बी ओके. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. सो इसका मतलब ये हो जाता है कि क्वार्टर पास्ट मतलब होता है 15 मिनट. ओके, तो 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं. कितने बज के? 12 बजकर. अब इफ यू विल बी सीइंग द नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज लेफ्ट इन, मतलब कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं. ठीक है, तो इन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट you have to put? Of course I have told you minute, and in second you have to put hour. So 45 left in 1. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 बजने में 45 मिनट्स बाकी है. 45 left in 1.
नाउ लेट्स सी दिस फेस ऑफ अ क्लॉक. सो इसमें कितने बजे हैं? अगेन वही सेम देसी स्टाइल में क्या बोलेंगे? 12:30 बजे. मतलब 12:30 हो चुके हैं. मतलब 30 मिनट गुजर चुके हैं. मतलब बजकर. तो 12:30. और पास्ट को आप लोग ये भी बोल सकते हो कि हाफ. तो 12:30. बस इतना इसमें ध्यान देना कि पास्ट के बाद यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे. ओके, सो 12:30 यू कैन से. और 12:30 मतलब क्या हो गया कि 12:30 या फिर 12:30 हो चुके हैं. तो इसे मैं नेक्स्ट स्टाइल में बनाऊंगा. एंड लेफ्ट इन. तो लेफ्ट इन में क्या हो जाएगा? 1 बजने में भी तो 30 मिनट बाकी है ना. तो लेफ्ट इन. सो 30 लेफ्ट इन 1. और यू कैन से हाफ लेफ्ट इन 1. The same way we can see over here, the first one is 1:30 बज रहा है. तो ठीक है, 1:30 बज रहा है, क्या बोलते हैं? It is 1:30. और you can say it is 1:30. Next one is 3:30 बज रहे हैं. It is 3:30. और you can say it's 3:30. So in this phase of the clock, what you can see, 1:45 बजे हैं. ओके, 1:45 उसे बोलते हैं अगर 12:45 हो रहे हैं तो 1:45 बजे को क्या बोला जाता है? And then again you have to apply the same formula, past 2 और left in. So 45 past 2:12 मतलब क्या हो गया? 45 मिनट गुजर चुके हैं. ठीक है, 45 मिनट गुजर चुके हैं. तो 12:45. So by this way you can use this formula to answer the time for this one. Or you can also say in left in. So 15 left in 1. Or you can say quarter left in 1. क्यों quarter यहाँ क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हमेशा 15 का मतलब हो जाता है quarter. So quarter left in 1. So you can use either way to speak about 1:45. Now you can see some more examples over here. So 2:45 बज रहे हैं. It is quarter left in 3. और 2:45 हो रहे हैं. जैसे क्या बोल सकता है? It is 45 past 2. तो 3:45 बज रहे हैं को क्या बोला जाएगा? It is quarts left in 4. और 3:45 होने को क्या बोला जाएगा? It is 45 past 3. Now let's see this last interface of the clock. And what's the time is it? So you can say 12:35 हुए हैं. ठीक है, मतलब 35 मिनट गुजर चुके हैं. तो आप लोग फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 दो तरह से बना सकते हो. क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ 12:35 तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 1 बजने में 25 मिनट बाकी है. सो 35 past 12 मतलब 35 गुजर चुके हैं. कितना बजकर? 12 बजकर. 35 past 12. So by this way you can use it in speaking the time. And if you want to put left in मतलब कि left in तो बचे भी तो हैं 25 मिनट. कितने बजने में? 1 बजने में. तो 25 left in 1. So if you will be doing like this, then there will be no need for. Remember, you should use the word it. Okay, here are some examples I have already written for you, so that you will be not having any problem to understand the time. So do one thing, pause my video right now so that you can go through these all times and you will be not having any problem if somebody is asking you the time. Remember, it, ये जो word है it is very very important to put before the time. अगर time बता रहे हैं तो it लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो just go through these all examples. And why have I written there? Because of these two formulas over here. So ये दोनों formula को अच्छे से याद कर लीजिएगा. Dash past 2 dash left in dash. ओके, सो लेफ्ट इन मतलब कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी है. और पास्ट 2 मतलब इतना बजकर इतना मिनट हो चुका है. ओके देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग द टाइम. बाय बाय.